ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. అందరికీ నమస్కారం. ఎలా ఉన్నారు? టీజర్ ఎలా ఉంది? బాగుందా? దయచేసి క్షమించండి. వి వర్ లేట్. సో దయచేసి డోంట్ మైండ్. అండ్ ఆల్సో నాకు తెలుగు అంతా బాగా రాదు. అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు టాక్ ఇన్ తెలుగు. అండ్ I won't take much time. I just want to thank the entire team of our movie KD, especially the cameraman Williams and my producer Suprit sir and Venkat sir, my music director Arjun Janya sir, especially my director Prem sir, and my heroine Reshma madam. And I'm very very happy that I work with Mr. Legend, and he is my favorite actor. Not only my favorite actor, Action King Arjun Sarja's favorite actor, Sanju Baba, and my brother's favorite actor, my grandmother's favorite actor, and might be my daughter's favorite actor also in future. So thank you so much for the opportunity. That's all I can say. And I worked with Shilpa ma'am, and I always like working with these people because they'll teach me. If I'm doing something wrong, they'll say, no, you have to do like this. Especially Shilpa ma'am told me twice, saying, no, you have to little less. No, you can. So she'll be correcting. So I learned a lot of things from ma'am. And thank you so much. It means a lot. And దయచేసి రిలీజ్ తర్వాత దయచేసి విత్ ఫ్యామిలీ మూవీ చూసి ఆశీర్వాదం చేయండి. ఇట్స్ రిక్వెస్ట్. అండ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సే ఐ లవ్ యూ. జై ఆంజనేయ. Thank you, Dhruva. Thank you so much and wish you good luck. Yeah. Something. Yeah, thank you so much and wish you good luck, Dhruva. And now, so డాగ్ దేవాగా మనందరి ముందుకి రాబోతున్న సంజయ్ దత్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. కేజీఎఫ్లో అదిరాగా చూసాము, నా డాగ్ దేవాగా చూడబోతున్నాం కేడీలో. సో ఎస్, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि हमने आप सबका वेट करवाया. वी वेरी सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर द पेशेंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग टीज़र. मैं ज़्यादा आप लोगों को बोर नहीं करूँगा, लेकिन आई जस्ट वांट टू थैंक वेंकी सर and Supreet for being such wonderful producers. In लोगों ने they've got the passion to make good cinema. I want to thank Prem sir. I think Prem sir is I think he's my chota brother, like Dhruva. He's the most humble, the most passionate director. He's the sweetest man I've met, and I want to thank him. Reshma, the most beautiful and little darling, and I was so happy to work with her. Dhruva, मेरा छोटा भाई, ये तो कंधे पे लेके घूमता है. हाँ, वो तलवार नहीं बॉडी लेके घूमता है यार. अपन तो तलवार लेके घूमता है, समझा? But superb. Thank you Dhruva for all the love. Thank you brother. And शिल्पा जी, the most amazing, वैसे ही हैं और हमेशा वैसे ही रहेंगे. And I'm so proud to work with her. वैसे ही लगती हैं जैसे कौन सी पिक्चर थी, आई लरे जंग. Thanks शिल्पा, thank you so much and thank you so much. Love you all. नमस्कार. Thank you. सर इतने सालों के बाद काम कर रहे हैं फिर टुगेदर. सो यू एंड शिल्पा जी वर्किंग आफ्टर लॉन्ग टाइम. सो कुछ बदला है सर? वैसे ही है तो वो तो ठीक है, और कुछ तो बदला. शिल्पा वैसे ही है. और मैं भी कभी कभी अगर कुछ मिस्टेक करता हूँ एक लुक दे देता हूँ कि ठीक है कि नहीं.
I do that. पता you नहीं know. सबको करेक्ट किया है, मतलब आपका सबको मतलब कुछ तो मिला है टिप. संजू और मैं बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे पहले थे, हम लोग बेटर हो गए हैं पहले से. Look at संजू, he's so handsome and he ये सीख मिली है मुझे. संजू जितने हार्ड वर्किंग है ना, वो दिखाते नहीं है, लोगों को पता नहीं होता, उनको सिर्फ ग्लैमर दिखता है, बाहर वालों को सिर्फ ग्लैमर दिखता है, लेकिन जो हार्ड वर्क ये करते हैं इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बावजूद, यू कैन इट्स वेरी इजी टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड व्हेन यू आर सच अ बिग स्टार. मैं हमेशा बोलती हूँ संजू को कि बहुत ऐसे कम हीरो होते हैं जो आके बस ऐसे ही चल के आ जाते हैं फ्रेम में और बस खड़े हो जाते हैं और सीटियाँ लगती है लोगों की. सो यू नो इट्स लाइक ही हैज़ दैट पावर इन हिज स्टांस, बट ही स्टिल is the hardest working man in the room. Right. So really, I mean that from the bottom of my heart. And वो जितने अच्छे एक्टर है उससे भी अच्छे इंसान हैं. So I think that's why I enjoy working with him. लेकिन ये बात तो मतलब ध्रुव से भी सुना गया है, आप Yes. एक्टिंग की गुरु है. ये क्या ये बोलना क्या है? चाहोगे ये आप? मैं करेक्ट नहीं, करने वाली. ये ध्रुवा ये also दोनों saying जो that. बोल रहे हैं कि मैं इनको सिखा रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और वो है प्रेम प्रेम जी. सर. मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन लेती थी इनसे. मैंने जिंदगी में कभी किसी को बोला नहीं कि ऐसे करो भाई. नहीं, मैं खुद अपने मतलब मैं खुद सीख रही हूँ. సో 18 ఇయర్స్ కే బాద్ కన్నడ ఇండస్ట్రీ అండ్ 20 ఇయర్స్ తర్వాత సంజయ్ దత్ సార్తో శిల్పా గారు కనిపించబోతున్నారు. యా అఫ్ కోర్స్ ఈజ్ బాలీవుడ్ స్టార్, హీ ఈజ్ నౌ పాన్ ఇండియా స్టార్. यस, now one more picture with media because शिल्पा जी अभी ज्वाइन किए, so इसीलिए one more picture with media.